वेलकम टू यूपीएससी एक्सप्रेस सीरीज बाय विक्ट्री आईएएस। मैं हूं अनमोल शर्मा और इस वीडियो में हम कंप्लीट टॉपिक कवर करेंगे एक ही शॉट में। दिस विल बी अ क्विक एंड फोकस्ड लेसन विदाउट वेस्टिंग टाइम। वीडियो के एंड तक यू विल हैव कंप्लीट कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड एवरीथिंग यू नीड about the topic for the exam. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में you can find the complete notes of the topic and watch this video along with the notes. Also join the Telegram channel of Victory IAS for schedule, notes and other study material. Subscribe to the channel and follow us on Instagram. तो चलो शुरू करते हैं. So today we'll discuss about two empires called the Vijayanagara Empire and the Bahmani Empire. And to give you some background, mid 14th century में there was political instability in the North India. हमने पढ़ा था मोहम्मद बिन तुगलक जो एक तुगलक रूलर था उसकी फुलिश पॉलिसीज या फिर अनवाइज पॉलिसीज की वजह से दिल्ली सल्तनत जो था वो वीकन होने लग गया था. एंड बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द नॉर्थ इंडिया, two major kingdoms emerged out of the Delhi Sultanate in the Deccan area. One Vijayanagara Empire and the other was Bahmani Kingdom. And as you can see over here, this was the Vijayanagara Empire and this was Bahmani Kingdom that was divided into multiple small kingdoms. We'll discuss about it later. तो ये दो एम्पायर्स थे जो कॉन्स्टेंटली बहुत सालों तक एक दूसरे को लड़े, बहुत सारी टेरिटरीज एक दूसरे की इन्होंने वो करी, कॉन्कर करी, राइट. सो नाउ let's start with Vijayanagara Empire that was founded by two brothers called Harihar and Bukka. Harihar and Bukka founded Vijayanagara Empire. Basically, they were captured as slaves. जब मोहम्मद बिन तुगलक ने डेक्कन इंडिया में बेसिकली जब कॉन्कर कर लिया था, तब हरिहर और बुक्का इन दोनों को अपने साथ एज अ स्लेव लेके गया था दिल्ली में. बट ड्यू टू द वीकनिंग ऑफ द एम्पायर, both of them escaped Delhi and came back to south and founded the Vijayanagara Empire on the Tungabhadra river. Tungabhadra river के अराउंड विजयनगरा एम्पायर की फाउंडेशन सेट करी. And one important feature of Vijayanagara Empire is it was ruled in the name of Virupaksha, Lord Virupaksha, जो कि शिवा का लॉर्ड शिवा के एक फॉर्म थे. तो जो रूलर्स थे they said to have ruled in the name of Virupaksha. All right, and when we talk about Vijayanagara Empire, there were four dynasties of Vijayanagara Empire. First was Sangam dynasty, then came Saluva dynasty, then came Tuluva dynasty, and the last dynasty of Vijayanagara Empire was the Aravidu dynasty. So let's take these dynasties one by one. When we talk about Sangama dynasty, the important rulers of Sangama dynasty were Harihara I, Bukka, Devraya II, and Krishna Devraya. Let's start with some facts about Harihara I. तो हरिहरा वन ने होयसाला किंगडम, जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, होयसाला किंगडम की टेरिटरीज कैप्चर करके विजयनगर एम्पायर में एनेक्स कर दी थी. हमने ये पढ़ा था कि होयसाला किंगडम के डिक्लाइन में दैट द होयसाला किंगडम गॉट एनेक्स्ड इनटू द विजयनगर एम्पायर, सो इट वाज डन बाय हरिहरा वन. एंड हरिहरा वन ने जो पूरी एम्पायर या पूरा किंगडम की एडमिनिस्ट्रेशन को डिवाइड कर दिया था मल्टीपल ग्रुप्स में एंड shared it with his brothers. The details, the factual details, you can find in the notes. Now we move to Bukka, जो कि who was the co-founder of Vijayanagara Empire, who ruled after Harihara I. He conquered Madurai. So Madurai add किया विजयनगर एम्पायर में by Bukka, also known as Bukka Raya. And विजयनगर एम्पायर को बहुत expand किया, expansion हुई under Bukka Raya, and he had diplomatic ties with China. All right. Now we come to Devraya II, जिसका टाइटल था, who took the title of Gaja Betakara. Gaja Betakara means the elephant hunter. एंड देवराया टू के टाइम पे बहामनी किंगडम, जो हमने देखा दूसरा किंगडम था साउथ में, बहामनी किंगडम के साथ लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी. तो दे स्टार्टेड फाइटिंग विद बहामनी किंगडम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ देवराया वन. एंड एक पर्शियन ट्रैवलर जिसका नाम था अब्दुल रजाक,
he came to the court of Devraya II. Sometimes this question is directly asked, which traveler came to the court of which king? तो आपको पता होना चाहिए. All right. And now we move on to the most important king of Sangam dynasty, Krishna Devraya, जिसके पीरियड को गोल्डन पीरियड या गोल्डन एज ऑफ विजयनगरा एम्पायर भी बोला जाता है. One thing to keep in mind that Krishna Devraya was from Tuluva dynasty, was not from Sangama dynasty. There was a mistake. Devraya too was from Sangam dynasty, but Krishna Devraya was from Tuluva dynasty, and his period was known as the Golden Age. And he fought with the Bahmani kingdom. Bahmani empire से constant fight किए थे, and he subdued them बहुत to a great level. He defeated the Bahmani kingdoms. And one important fact about Krishna Dev Raya was that he was contemporary of Babur. तो अभी तक बाबर इंडिया में आ चुका था, and he was Babur's contemporary. Contemporary मतलब बाबर के साथ उसी टाइम के, सेम टाइम के हैं दोनों. And Krishna Dev Raya established good diplomatic ties with Portuguese. So that means इस टाइम पे पोर्चुगीज भी इंडिया में आ गए थे. If we talk about the time period, 1509 में he came to power and he ruled till 1530, and that is why it's called the Golden Age. All right, so this was all about the major rulers and what happened during their time of Vijayanagara Empire. More factual details and details about the minor rulers you can find in the notes in the description box. So now we talk about the administration and polity of Vijayanagara Empire. As we know, Vijayanagara Empire monarchy थी, king rule करता था, and king had absolute power, but he was assisted by a council of ministers. All right, so ministers used to advise the king, and the ultimate decision used to rest with the king. And when we talk about the administrative divisions, क्या divisions थी empire में, तो सबसे बड़ा या province को बोलते थे मंडलम. Mandalam were further divided into Nadu. Nadu was divided into Sthala, and Sthala was further divided into Grama. So this was the village level, this was group of village, then this was the district level, and Mandalam were the provinces. And यहाँ पे भी Nayankara system, as we discussed under the previous chapter, Nayankara system, that the system of giving land grants to the military chiefs who would then undertake the administration and law and order in that particular land. Nayankara system was followed, and it was led, जो military chiefs थे उनको नायक्स बोला जाता था, and नायक्स का काम होता था troops को maintain करना, army को maintain करना, and administration उस area की govern करना, and they paid tribute or some sort of money and respect and help to the king when in need. And इस troop contribution के लिए जो land दिया जाता था, for this troop contribution, it is also called amaram system. Amaram system. And Nayankara system was basically land granted in lieu of salary. Salary के जगह high ranking officials को या military generals को land दे दिया जाता था. That was the Nayankara system. And for maintenance of troops, military generals को Amaram system बोला जाता था. So these were the two systems associated with the Vijayanagara Empire. More details you can find in the notes. Now we move on to the economy and trade during Vijayanagara Empire. सो विजयनगरा एम्पायर में बहुत सारी एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती थी, जैसे कि टेक्सटाइल्स प्रोड्यूस करना, एग्रीकल्चर ऑफ कोर्स वाज द मेन फंक्शन, माइनिंग, ये सब एवरीथिंग वाज अंडरटेकन इन विजयनगरा एम्पायर. एंड देयर वाज अ ह्यूज ट्रेड जिसमें कि राइस, आयरन, सैंडलवुड, ये सब विजयनगरा एम्पायर से एक्सपोर्ट होते थे. सैंडलवुड, चंदन, आज भी चंदन बहुत फेमस है उस एरिया का. सो दे वर द आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट्स, एंड एक्सपोर्ट्स वर डन टू साउथ ईस्ट एशिया एंड अदर एम्पायर्स. एंड इंपोर्ट्स में हॉर्सेस, अरब अरेबिया के रीजन से हॉर्सेस आती थी, आइवरी जो कि टस्क्स होते हैं एलिफेंट के, वो सब, और सिल्क फ्रॉम चाइना दैट यूज्ड टू बी इंपोर्टेड. All right, so for more details you can refer to the notes. Now we talk about the society कैसी थी विजयनगरा एम्पायर की. तो जो सोशल स्ट्रक्चर था उस पे सबसे टॉप पे आते थे नोबल्स, फिर आते थे मिडिल क्लास जैसे कि ट्रेडर्स,
आर्टिसंस, फिर जो कॉमन लोग होते थे जैसे कि फार्मर्स, लेबरर्स, वो कॉमनर्स होते थे. सो इट वाज अ hierarchy in the society. And when we talk about women, women also played an important role in the society, especially politics, literature. Even there is mention of women wrestlers. All right. And sati or child marriage was still prevalent, but upper class में ही होते थे. Common people इतना नहीं इन सब में थे. Overall, when we talk about the religion, it was a religiously tolerant society, religiously tolerant थी, where we saw Lord Virupaksha के name पे the kingdom was being ruled, but Muslims were also in the administration, so ऐसा कोई religiously भेदभाव नहीं हुआ था. And the most important part of Vijayanagara Empire is the architecture that we will take separately under the art and culture section, but you can go through the notes for factual details till then. Talking about the decline, एक battle हुई थी during the later rulers of Vijayanagara Empire called the Battle of Talikota. Battle of Talikota के बाद Vijayanagara Empire weaken हो गया था and it eventually declined. All right. And continuous wars थे Brahmani kingdom के साथ. I told you every ruler used to fight. There were periods of peace and then there were periods of fighting. तो उससे eventually economic drain हुआ and uh, डिक्लाइन हो गया विजयनगरा एम्पायर. एंड देन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द नायक्स, जो कि मिलिट्री जनरल जिनको लैंड दिया जाता था एंड उनको ऑटोनॉमी दिया जाता था टू रूल द लैंड हाउ एवर दे वांटेड. सो इवेंचुअली दीज नायक्स बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड they broke away from the empire that weakened the empire. All right. So in the year of 1646 AD, Vijayanagara Empire finally fell. In the notes you can see a table of all the foreign travelers. There were many travelers like Ibn Battuta, Niccolo di Conti, Abdul Razak, Domingo Pace. So all these travelers, you can find the name in the notes. They came to the Vijayanagara Empire. So किस ruler के time पे कौन सा traveler आया, that you can find, and what were the observations that were made. All right, so this was all about the Vijayanagara Empire. You please refer to the notes for more factual details. And now we move on to the next Bahmani kingdom. So Bahmani kingdom, as you can see, was in the Deccan region of India, and uh, it was later broken down into multiple kingdoms. वो हम अभी discuss करेंगे, but you should know that it was founded in 1347 by a person called Alauddin Hassan Bahman Shah, and उसी के नाम पे Bahmani kingdom पड़ा. So Alauddin Hassan Bahman Shah was the founder, and he was also called Hassan Gangu. एंड ये भी दिल्ली सल्तनत में एक सर्वेंट था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे. ही डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस, केम टू द डेक्कन रीजन एंड एस्टैब्लिश्ड भामनी किंगडम with the capital Gulbarga. Capital was Gulbarga. एंड जो भामनी किंगडम्स थे या किंग्स थे, यहाँ पे कृष्णा रिवर फ्लो होती है. कृष्णा तुंगभद्रा दोआब बोलते हैं इस रीजन को. एंड दे कंटिन्यूसली फॉट ओवर किंग कृष्णा तुंगभद्रा दोआब, क्योंकि वो बहुत एक फर्टाइल लैंड था एंड दे वांटेड कंट्रोल ओवर दिस पर्टिकुलर एरिया ऑफ कृष्णा तुंगभद्रा दोआब. तो जो भी लड़ाई विजयनगरा एम्पायर और भामनी एम्पायर की थी, दैट वाज फॉर कंट्रोल ओवर दिस एरिया. Now we talk about the important rulers of Bahmani kingdom. So Muhammad Shah I was there. Nothing much important about his rule, but he defeated the Nayaks of Vijayanagara Empire. Then came Muhammad Shah II. उसमें भी ज़्यादा कुछ important नहीं है. Now we skip to Firoz Shah Bahmani, who was an important person, important figure. He came to the power in 1397 AD, and ही वॉज अ मल्टीलिंगुअल पर्सन. और बहुत कल्चरल डेवलपमेंट हुई थी इन दी भामनी किंगडम ड्यूरिंग हिज टाइम. मल्टीलिंगुअल, एंड इफ आई टॉक अबाउट द लैंग्वेजेस he knew Persian, Arabic, Turkish, Telugu, Kannada, Marathi, and
he promoted arts, science, astronomy in the Bahmani kingdom, and he even integrated Hindus into the administration. So again, kingdom was ruled by Muslim rulers, but एडमिनिस्ट्रेशन में दे ऑल्सो इंटीग्रेटेड हिंदूज, तो ऐसे रिलीजियस भेदभाव नहीं होता था. एंड फिरोज शाह बहामनी डिफीटेड विजयनगरा एम्पायर किंग्स ट्वाइस, बट इवेंचुअली ही लॉस्ट एंड लेड टू हिज फॉल. सो फिरोज शाह बहामनी के बाद एक इम्पोर्टेंट रूलर आते हैं, नॉट एग्जैक्टली बाद, बट आफ्टर सम गैप, हु इज कॉल्ड मोहम्मद शाह थ्री. मोहम्मद शाह थ्री, ये खुद में इम्पोर्टेंट रूलर नहीं है, बट जो इनके प्राइम मिनिस्टर या वजीर थे, ही इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड विल डिस्कस अबाउट हिम ऑल्सो. सो बेसिकली जब मोहम्मद शाह थ्री केम टू पावर, ही वॉज ओनली 9 years ओल्ड. तो एक ऐसा रीजेंट बोलते हैं जिसको, जो कि एक कहते हैं ना, एक मेंटर, वो मोहम्मद शाह थ्री का बना महमूद गवान. Mahmud Gawan, and actually he was the one who was ruling the whole empire in the name of Muhammad Shah III, because Muhammad Shah III was just 9 years old. And under Mahmud Gawan, Muhammad Shah III captured the areas of Konkan, Odisha, and विजयनगरा एम्पायर को बहुत बार हराया मोहम्मद शाह थ्री में के नाम पे मोहम्मद गवान ने, महमूद गवान ने. सो टॉकिंग अबाउट महमूद गवान वाज एक्चुअली एन ईरानियन ट्रेडर. वो ईरान का ट्रेडर था, and later he turned into the prime minister of Muhammad Shah III, and he had the title of Malik e Tujjar. Malik ul Tujjar का टाइटल महमूद गवान को मिला था. and he expanded the empire vastly. We saw कोंकण, उड़ीसा, विजयनगर एम्पायर को हराया था, and इराक और ईरान के साथ ट्रेड एक्सपैंड किया महमूद गवान ने. and not just that, he built many madrasas for Islamic learning, and after his death eventually led to the fall of the complete Bahmani kingdom. महमूद गवान के बाद जो सक्सेसर्स थे वो वीक सक्सेसर्स. उनके पास कोई ऐसा रीजेंट या स्ट्रॉन्ग मेंटर नहीं था who would fight for them and work for the betterment of the empire. तो जो पूरा बहमनी किंगडम था, it broke down into 5 different kingdoms. and वो 5 different kingdoms क्या हैं? Kingdoms और sultanate that were, so the 5 sultanates that the Bahmani kingdom got divided into was the Adil Shahi Sultanate of Bijapur. So capital was Bijapur, and the second was Qutub Shahi Sultanate of Golconda. Qutub Shahi Sultanate of Golconda. Nizam Shahi Sultanate of Ahmednagar. Here there was a small sultanate of Barid Shahi Sultanate of Bidar, and the last sultanate was Imad Shahi Sultanate of Berar. So these were the 5 sultanates. Vijayanagara Empire, Krishna Dev Raya was a very strong ruler during that time, and in the year of 1526 AD, the whole Bahmani kingdom, it divided into small sultanates, the 5 sultanates we just discussed with their capitals. So it's very important to know the name of the sultanate and what were the capitals. एंड फिर ये जो डिफरेंट डिफरेंट सल्तनत थे, ये इंडिपेंडेंटली रूल करने लग गए. एंड उस टाइम तक नॉर्थ इंडिया में मुगल्स वर देयर. सो एक एक करके इन सल्तनत्स को मुगल्स ने कॉन्कर किया. जैसे कि जो बीजापुर है, द आदिल शाही किंगडम ऑफ बीजापुर, इट वाज अनेक्स्ड बाय औरंगजेब. जो निज़ाम शाही सल्तनत था ऑफ अहमदनगर, इट वाज कॉन्कर्ड बाय शाहजहां ने कॉन्कर कर लिया था. Qutub Shahi Sultanate of Golconda was also annexed by Aurangzeb. All right, so ये वीक हो गए थे एक एक करके, मुगल्स ने इनको कॉन्कर करना शुरू कर दिया था. बेरार शाही एंड बेसिकली जो जो बीदार है, द बरीद शाही किंगडम वाज annexed बाय आदिल शाही, एंड अल्टीमेटली औरंगजेब ने दोनों को, बरीद शाही और आदिल शाही को, कॉन्कर कर लिया था. All right, so this is all about the 5 different sultanates of
Bahmani kingdom, and eventually they were overtaken by the Mughal emperors. अब बात करेंगे polity and administration of Bahmani kingdoms. So basically जो पूरा initially जो पूरा Bahmani kingdom था, it was divided into 8 provinces. So 8 provinces में divide किया था, and each province was called Taraf, and these tarafs were governed by official called tarafdars. And जो military थी उसको run करते थे official called amir. So they were like military generals. And in fact Bahmani kingdoms were one of the few शुरुआत के रूलर्स थे जो कि गन पाउडर वॉरफेयर में यूज करते थे. अभी तक लड़ाई स्वॉर्ड से होती थी, तो बाबर के आते हुए गन पाउडर स्टार्टेड टू बी यूजिंग, एंड Bahmani kingdoms या Bahmani kings were the first ones, initial early users of gunpowder. All right. And इस तरफ में तरफदार्स administration को देखते थे, and they gave a good administration, especially under the strong rulers. More details about the rulers and their contributions, they are factual, you can find in the notes. There's a complete list of rulers from each of the sultanate that we discussed. And Bahmani kingdoms had an immense contribution, काफी contribute किया in art and architecture. All right. Paintings में काफी contribute किया. In detail we will take all these things in the art and culture topic, but you can still refer to the notes to access these details. And eventually when we talk about the decline of Bahmanis, we saw कि 5 kingdoms में split हो गए थे एक एक करके. मुगल रूलर्स ने इनको कॉन्कर करने लगा, एंड अल्टीमेटली औरंगजेब ने मोस्ट ऑफ दी Bahmani kingdom को अपना पार्ट बना लिया, became part of the Mughal dynasty or the Mughal kingdom, and that marks the end of our discussion on Bahmani kingdom and the Vijayanagara empire. You can refer to the notes for more details.